हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन डिराइव करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज अ बॉडी which is rotating around this axis. Let it consists of n masses of mass m1, m2, m3 and so on. Let r1, r2, r3, rn represent their perpendicular distances from the rotational axis. अगर इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो हर एक पार्टिकल की एक लीनियर वेलोसिटी होगी विच विल बी गिवन बाय वी एन इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर एन. नाउ फॉर अ पार्टिकल द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एम वी इंटू आर. So the first particle will have a linear momentum of m1 v1 r1 and this is equal to m1 v1 is omega times r1, so I can write m1 omega r1 square. इसी तरीके से I can write the angular momentum for the second particle of mass m2. It is m2 omega r2 square and so on. And for nth particle, angular momentum is given by mn omega rn square. Now, if we wish to calculate the total angular momentum of the whole body, पूरी body का हमें angular momentum निकालना है. It will be the sum of all the angular momentums L1, L2 up to Ln. I will get m1 this upon solving. Now, what is this term? We've already discussed. This is the moment of inertia. So, I can write the total angular momentum is equal to moment of inertia times the angular velocity. So L is equal to I into omega. Now from here we can write I is equal to L upon omega. इस definition से हम moment of inertia भी define कर सकते हैं. The moment of inertia of a rigid body about a given axis is equal to the angular momentum of a body when it is revolving or rotating at a unit angular velocity. अगर हम ओमेगा की वैल्यू 1 रख दें तो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल कम आउट टू बी इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम. नाउ लेट्स फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. We know that rotational kinetic energy is given by half I omega square, where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity of the object. Let me multiply and divide it by I. I will get half into I square omega square, and this I omega is equal to angular momentum, so L square upon 2I. This is the formula for rotational kinetic energy in terms of angular momentum. Now let's look at another relation between torque and moment of inertia. Let's consider we have a body जिसमें n पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस हैं m1, m2, m3 और उनके जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी हमें गिवन है. इनिशियली बॉडी वाज रोटेटिंग एंड एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. नाउ इट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन. अगर ये बॉडी एक्सेलरेट करती है देन एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, दैट इज अल्फा. बट हर एक पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी. an is equal to alpha times rn. Since r is different, so a is also different. So individual particle की acceleration will be given by these. Now हर एक particle पे individually कितनी force लग रही है that will be given by force is equal to mass into acceleration. Mass of first particle into acceleration of first particle, or I can write it as m1 alpha times r1. इसी तरीके से force on second particle will be given by m2 alpha times r2, and this continues, and force on nth particle will be given by mn alpha times rn. Now individual particles के ऊपर torque कितनी लगेगी? देखो torque is r vector cross f vector. If we assume the forces are perpendicular to the distance vector, then tau 1 is equal to r1 f1, tau 2 is equal to r2 f2 and so on. तो इसका मतलब tau 1 की वैल्यू होगी
R1 into F1 means M1 alpha times R1 square. Torque on second particle will be M2 alpha times R2 square, and so on. Torque on nth particle will be given by Mn alpha times Rn square. Now the total torque on the body will be the sum of all these torques. It will be equal to this term. Now ये term किसके बराबर है? It is equal to the moment of inertia. So I can write it as I into alpha. This is the expression for torque in terms of moment of inertia. इस रिलेशन से भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर सकते हैं टाउ पर यूनिट अल्फा. Moment of inertia of a given rigid body about its rotation axis is equal to the torque acting on a body which is revolving or rotating with a unit angular acceleration. अगर कोई बॉडी रिवॉल्व या रोटेट कर रही है और उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिटी है, then in that case moment of inertia is equal to the torque acting on the body. If we are asked to derive a relation between torque and angular momentum of a body, we know that angular momentum is equal to I times omega. Now let's differentiate both the sides with respect to time. I'll get dl upon dt is equal to I into d omega upon dt, क्योंकि जो moment of inertia है, this is a constant quantity. टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रही है. ओमेगा कैन बी चेंजिंग विद टाइम, एंड इफ ओमेगा इज चेंजिंग विद टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा. सो व्हाट इज दिस टर्म आई इंटू अल्फा? अभी अभी हमने डिराइव किया है. दिस आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू द टॉर्क ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. सो आई कैन राइट टाउ इज इक्वल टू dl upon dt, or the rate of change of angular momentum. This is the relation between the two. अभी तक हमने जितना भी एनालिसिस किया है, now we are in a position to compare the two types of motion, linear motion and rotational motion. linear motion में अगर मास है तो rotational motion में वो रोल कौन प्ले कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. linear motion में जो काम वेलोसिटी का है, एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी का है. जिस तरीके से लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन है, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन है. लीनियर मोशन में हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जबकि एंगुलर मोशन में हम लिखते हैं टॉर्क विच इज द रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. लीनियर मोशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड इन रोटेशनल मोशन द एंगुलर मोमेंटम दैट इज L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा. लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में इट्स हाफ I ओमेगा स्क्वायर. हियर फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड हियर torque is equal to the rate of change of angular momentum. तो इस एनालिसिस से हम बता सकते हैं कि अगर लीनियर मोशन में वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन इन एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, द वर्क डन का काउंटर पार्ट वर्क डन ही होगा. फोर्स का काउंटर पार्ट होता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और अगर पार की बात करें, पार इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर भी काउंटर पार्ट पार ही होती है. फोर्स का काउंटर पार्ट होता है टॉर्क और वेलोसिटी का काउंटर पार्ट होता है एंगुलर वेलोसिटी. लेट्स लुक एट द इक्वेशंस ऑफ मोशन दैट वी हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड. जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और ये उनके रोटेशनल और लीनियर काउंटर पार्ट्स हैं. In the next video, we will talk about the principle of conservation of angular momentum. Thank you for watching. Have a good day.